Dear students, welcome to Udyakar class. Today we will discuss various MCQs. तुम मानकर गोटे थिला कि आमर MCQ डिस्कशन हवा दरकार. एबे आमे we will discuss MCQs. Okay. ताले बर्तन देखो आमर डेज गुडा रहिला मोर मु क्लास नेबी that is Monday, Tuesday, Thursday, Saturday सबले मु कहिची एवं आज भी कहूची that these are your my classes. नेक्स्ट है देख तुम इंग्लिश ग्रामर उपरे बेसिक टू एडवांस रोचे कौन ना 9.15 9टा 15 ऑनवर्ड्स तुम रोचे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्रीली यू कैन जॉइन एथर किसी प्रॉब्लम नहीं तुम जॉइन कर परियो. हाँ ओके ठीक अच्छे चल बर्तमान आम जा देख फर्स्ट क्वेश्चन टू यू डिमांड एग्जामिन्स ओनली द फाइनल कंज्यूमर्स डिमांड फॉर डैश गुड्स सर्विसेज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स नन ऑफ द एबव हु कैन से कौन हम देखा ये कहल what would be your answer? Tell me. आंसर कौन हम पिले डिमांड एग्जामिन्स ओनली द फाइनल कंज्यूमर्स डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स नन ऑफ द एबव ताले एटा फोकस कोडी करची एटा कौ जगह फोकस करची कंज्यूमर्स डिमांड पोर्शन में ताले नाउ यू ऑब्जर्व कंज्यूमर्स डिमांड तेनु नाउ रिकलेक्ट सी आंसर इज योर सी लिखल किए कहला देखिए पुष्पलता तराई मामुनी परिडा मानस रंजन साहू यू टोल्ड दैट द आंसर इज सी यू आर करेक्ट आंसर इज सी वाई आंसर इज सी आम जाना दरकार ये रहा गुड्स ताले कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स आर आल्सो देयर कंज्यूमर डिमांड गुड्स सर्विसेज सर्विसेज को डिमांड भी करती साई अंजलि सी ओके अच्छा तापर देखिए ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ऑफ द एबव ताले नॉन ऑफ द एबव केबे हब नाही कहीं ना जेहेतु कंज्यूमर विल डिमांड समथिंग ताले से समथिंग रे कौन आसीबो खाली गुड्स आसीबो नहीं सर्विस भी आसीबो किंतु आम पाखे ऑप्शन नहीं जे गुड्स एंड सर्विसेज ताले कौन आसीबो ना ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स ताले कंज्यूमर डिमांड जेतेबेले करे से कौन खाली ड्यूरेबल गुड्स करे से ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स को भी कंज्यूम करे और डिमांड करे तेणु कंज्यूमर ऑलवेज डिमांड ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. Thank you. Anybody else? Any question? Raise your hand and talk with me. Or any question you can ask also. जदि किसी क्वेश्चन अच्छी मत पचार. ओके चल जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की ताले कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू ताले एठी आंसर रे आमे कोन पाइबा प्राइस ऑफ द गुड्स इंडिफरेंस कर्व रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स बजेट कन्स्टेंट ताले व्हाट वुड बी योर आंसर ताले एटी चारिटा ऑप्शन हमकु मिलिची ताले गोटे कोन ना कंज्यूमर एम्स एट फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली देन यू रीड द आंसर आल्सो प्रॉपर्ली एंड व्हिच विल बी सुइटेबल आंसर ट्राई टू गिव योर आंसर ताले कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू कोन प्राइस ऑफ गुड्स देला इंडिफरेंस कर्व देला रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स देला बजेट कंस्टेंट देला ताले व्हाट वुड बी योर आंसर. अच्छा ओके एनीबॉडी एल्स इथरे किछि जणा पड़नी कंप्यूटर टा कोन एमदी होइछि माने बड़ प्रॉब्लम होइछि.
हाँ मानस, you have asked that what is the difference between durable and non durable goods. ताले durable goods माने कौन, non durable goods माने कौन, हमें आगे बुझीबा. ताले durable goods माने कौन ना, which can be preserved for a longer time. ताले मने करो गोटे एग्जांपल हैला तमरा फर्नीचर. ताले फर्नीचर कैन नॉट बी यूज्ड संगे संगे. ताले इट इज ए ड्यूरेबल गुड्स, यू कैन यूज इट फॉर सेवरल इयर्स आल्सो. नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सपोज नाउ ब्रेड. ताले ब्रेड इज ए नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और मिल्क, फिश, ऑल दीज आर योर कौन नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ताले नॉन ड्यूरेबल गुड्स हमें क्या कहबा ना, व्हिच कैन बी कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, नॉले इट विल बी वेस्टेड. तो हमें रखी परिबानी. फायरी एक्सप्रेस डी, पुष्पलता लॉन्ग टाइम हाँ लॉन्ग पीरियड हूँ लॉन्ग पीरियड माने तमें लॉन्ग पीरियड पर जो गुड्स को यूज करिवो ताले दैट इज योर कौन ड्यूरेबल गुड्स. एंड जोटा एकदम वेरी शॉर्ट इमीडिएटली जोटा वेस्ट हो जिवो ताले दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल और पेरिसेबल गुड्स, वेरी गुड. ये पुष्पलता तरह वेरी गुड. ताले नॉन ड्यूरेबल गुड्स को आम पेरिसेबल गुड्स को भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहवा. ताले एठी आंसरटा कौन हम এই क्वेश्चन ने जोटा कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी. ताले एठी बहु पिला 2-3 जन पिला आंसर देचनी बी इंडिफरेंस कर बी देचनी. आउ किछि पिला देच सुभाष देची, सायरी देची डी. ताले तमर आंसर हबो डी. ताले मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी सब्जेक्ट टू ए बजेट कंस्ट्रेंट. ताले कंज्यूमर इज कांस्टेंट टू हिज बजेट. ताले काहेकि ना व्हेन यू आर गोइंग टू कंज्यूम एनी कमोडिटी दैट यू मस्ट बी कांस्टेंट विथ कौन ना बजेट. बजेट मीन्स कौन योर मनी इनकम. एंड बजेट इक्वेशन हमें केमी लिखुचे, सपोज एम विल बी योर मनी इनकम, एम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई. सपोज यू आर गोइंग टू कंज्यूम 2 गुड्स एक्स एंड वाई. ताले यू शुड नो प्राइस ऑफ दैट गुड. ताले quantity of good x multiplied with price of x, that is the expenditure incurred over good x. And py कौन price of good y, y is your quantity of y. ताले price of y multiplied with quantity of y, that will give you कौन ना, that is the expenditure on y. ताले total expenditure must be equal to m. काहेकि ना एटा को हमें बजेट कांस्टेंट काहेकि कहबा ना, आमे नौचे assumption and indifference curve should be there, indifference map should be there, and that given money income. ताले आमे जेते बेले एक्सप्लेन करिया को जीवा मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी हमर केते गुडी assumptions रही. ताले कोन ना, द कंज्यूमर बिहेव्स रेशनली, consumer has to consume 2 goods x and y, and consumer has certain amount of money income which will be spent over the 2 goods x and y. ताले एई जगह रे कोन हबो ना, दिस इज योर बजेट कांस्टेंट. ताले द आंसर इज योर कोन बजेट कांस्टेंट. बुझिएला क्लियर? एनी रेज योर हैंड और गिव रिमार्क और गिव योर थंब मार्क. जदि बुझी पारला गिव योर थंब मार्क. जदि बुझी पारला गिव योर थंब मार्क. I am waiting for your answer. Then we will go to next question. If you understand, then you give your thumb mark or reply me. Okay, very good, Sai Anjali. Next we will go to next question. देखो, कंज्यूमर अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी व्हेन MUX is equal to MUY, marginal utility of X is equal to marginal utility of Y, PX is equal to PY, that is price of X is equal to price of Y, MUX is equal to PX, none of the above. Who can say? किए कहि परिबो को? हाँ, very nice. ये कही परिबो what would be our answer in the present question?
किए कहि परिबो व्हाट वुड बी योर आंसर सी अच्छा ये सुभाष मिश्र सी आउ किए कहबो आई एम वेटिंग अदर्स सी सी आउ किए कहबो yes the answer is your C काहेकि ना a consumer derive maximum satisfaction only when the marginal utility derived from that commodity must be equal to price of that commodity then this would be your answer clear एबे थम रेज करिवो मते थम सिंबल दबो जेमी देलो आगो ये रे ताल मु जानिबी कोन यू अंडरस्टैंड एंड गॉट द आंसर केते जन अछन ओके give your thumb mark yes 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 okay then we will go for next question ताले next question देखिया कोन that is the concept of marginal utility is implicit in the definition of MRS because से कोइ कोन आगे क्वेश्चन बुझ से कहला कोन the concept of marginal utility ताले marginal utility रो जो concept रहिला the term marginal utility is implicit that is कोन inherited that is implied there कोठी ना in the definition of MRS कोन marginal rate of substitution ताले marginal rate of substitution द definition कोन the rate at which one commodity हाँ सुनील कुमार थैंक यू वेरी मच ताले marginal rate of substitution is that the rate at which one commodity is substituted for another okay ताले बर्तन देखो आमे एटा को आंसर हबो MRS XY is equal to MUX by MUY MRS XY is equal to MUX by MUY PX is equal to PY MUX is equal to MUY ताले which would एटी डबल कर देछि एटा भूल करछि डबल केमि करि हां which would be your answer हां नहीं ठीक अछि it is a marginal revenue of XY MR ताले which would be your answer who can say answer would be your yes go A or B or C who can say answer B would be your कौन से कहला B हाँ सुभाष ना सुब्रा मिश्र साई अंजलि ओके द आंसर इज योर बी कहीं ना द concept of utility is implicit in marginal rate of substitution because marginal rate of substitution of x and y is equal to ratio of their marginal utilities that is कौन MUX by MUY ताले this is your answer तापरे आसीबा एडी देखो एडी गोटे क्वेश्चन आसिला the consumer by choosing a collection of goods in any one budget situation it is not retail it is reveal REVEALS not retail reveals his preference for the particular collection reveals to axiom of consistency axiom of rationality transitivity axiom the revealed preference axiom tale this question that the consumer by choosing a collection of goods
in any one budget situation reveals his preference for the particular collection refers to ताले गोटे निर्दिष्ट कलेक्शन को सी जदि प्रिफर कला ताले एटा को एक्जियम भितर आसीबो के कहयो पिला आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नले मु बुझेबी who can say हाँ अरे कुह भूल हो आम डिस्कसन करिया बा डी किए कहला साई अंजलि ओके आउ किए कहबो आउ किए एनीबॉडी एल्स आउ किए कहबो एनीबॉडी एल्स बी अच्छा शुभ्रा मिश्रा हाउ इट इज बी आस्क मी टेल मी गो टू रैंड रेज ऑप्शन नहीं अच्छा ताले बी केमती हला बी केमती हला मानस रंजन साहू बी केमती हला ताले बी रे कौन कहूँ एक्जियम ऑफ रेशनैलिटी कौन ना इट इज रिलेटेड टू क्या को ना रेशनैलिटी बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर किंतु एथि से कौन कहला तुम क्वेश्चन कौन कही दी कंज्यूमर बाय चूजिंग ए कलेक्शन ऑफ गुड्स इन एनी वन बजेट सिचुएशन ताले कौन सी एक बजेट सिचुएशन रे से जदी गोटे गुड्स को सिलेक्शन कला कलेक्शन ऑफ गुड्स को ताले सेठी कौन हबो ना रिवील्स हिज प्रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर कलेक्शन ताले एटा नुहे कि ताले जेते बेले से गोटे कमोडिटी बंडल को चूज करूची ताले दैट मीन्स कौन इट रिवील्स टू प्रिफर दैट कमोडिटी दैट कलेक्शन ताले दैट इज नोन एज योर कौन ना दी रिवील्ड प्रिफरेंस एक्जियम आको आमे कौन कहबा रिवील्ड प्रिफरेंस एक्जियम बोली कहबा द आंसर इज योर डी नॉट योर रेशनैलिटी और ट्रांजिटिविटी और दैट इज योर एक्जियम ऑफ कंसिस्टेंसी बुझिला ताले डी किए कहिची डी कहिथिला हमर किए साई अंजलि इट इज गुड साई अंजलि वर्तमान डी कहिथिला तेणु साई अंजलि इज करेक्ट तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हमर वर्तमान आसिला ऑप्शन डी इज स्पेलिंग मिस्टेक हाँ इट इज रिवील्ड एलईडी रिवील्ड प्रेफरेंस एक्जियम ओके थैंक यू फॉर योर करेक्शन देखा these are the courses brahmastra power pack tell it is these courses are given by udyakar classes to you that OPSC PGT compulsory odia english history and others ssb tgt ltr rst oss tet arts pcm cbz english hindi ltr rst prelim OTET paper 1 all subject paper 2 social studies paper 2 mathematics and science SSB lecturers ओडिया इंग्लिश एजुकेशन एंड अदर्स तापरे OSSC OSSSC OPRB CGL RI ARI OMIN and SFS SI police B.Ed रे आर्ट स्ट्रीम एंड साइंस स्ट्रीम J and PEO entrance exam JTS primary classes 1 to V upper primary arts upper primary science well these classes are provided to you tenu tell your friends or tell anybody else to join in these courses in Udyakar platform Siba ame next tale these are your timetable of various teachers tale those who are taking different classes tale kono subject general studies mathematics reasoning general studies arithmetic computer general studies mathematics arithmetics general studies reasoning general studies English mathematics general studies computer tala as per the times these are your time schedule for different days in weekend tala gote week re को दिन को क्लास अच्छी आम एथुरु जानले अच्छा नेक्स्ट जीवा दिस इज योर CGL प्रीलिम्स मेन प्राइस होची 2799 वैलिडिटी फॉर 6 months now at 1499
ताले कार एटा रिया आरआई अमीन एंड एआरआई ताले आ पे 1499 एंड सीजीएल पे 2799 बुझिला ताले these classes you can take or you can opt for those who are applying and you can opt for अच्छा ताले ट्रांजिटिविटी एक्सियम सेज ताले ट्रांजिटिविटी एक्सियम कौन कहूची ट्रांजिटिविटी एक्सियम कौन कहूची हमें जानिबा दरकार कौन कहूची देख पिले ट्रांजिटिविटी एक्सियम रे आंसर देला इफ a is greater than b then b is greater than a if a is less than b then b is greater than a if a is greater than b and b is greater than c then a is greater than c none of the above who can say the answer c on sai koila c answer is c anybody else आउ के कहबो सी सुभाष कहला सी आउ के कहबो सी आउ के कहबो सी वेरी गुड ताले यू आर मु जानिली एबे मु जहा पढ़ेइची तमे सब बुझी पारिछ मते भारी खुशी लागिला द आंसर इज योर सी ताले दिस इज ट्रांजिटिविटी असम्पशन ताले मने करो A is a commodity bundle, B is a commodity bundle, C is another commodity bundle. ताले if a consumer prefer one commodity bundle A to that of B and if consumer prefers B than C, ताले obviously A will be preferred to C. ताले that is called your transitivity assumption. Very nice. तापर जीवा which curve is derived from the behavior actual choice of the consumer in various market situation on the basis of revealed it is revealed not S L this is L revealed preference axioms के कहबो डिमांड कर्व कॉस्ट कर्व इंडिफरेंस कर्व रेवेन्यू कर्व ताले व्हिच वन इज योर करेक्ट आंसर ताले हियर क्वेश्चन आगे देखो व्हिच कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिहेवियर एक्चुअल चॉइस of the consumer in various market situation on the basis of revealed preference axioms. I am waiting for your answer. Okay. All try to give your answer. Let it be wrong. No problem. We will discuss. Anybody else? Anybody else? C. Then anybody else? Indifference curve. Then anybody else? C. Then anybody else? C. Okay. C. Very good. ताले वर्तमान एटी हमें देखिले कौन the answer is our indifference curve. ताले कहीं की ना देखो क्वेश्चन टाको हमें बुझीबा which curve is derived from the behavior actual choice of the consumer. ताले behavior of the consumer that means कौन selection of the commodity bundles. Indifference curve हमें क्या कहूचे it represents all those combination of goods X and Y which provides equal level of satisfaction to the consumer. ताले it is कौन सी ये करची ताले ये को चॉइस टाको ये करची ना the actual choice of the consumer को रिप्रेजेंट करची ताले को कमोडिटी बंडल को से चूज करची ताले जो कमोडिटी बंडल से मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पाइबो सेही कमोडिटी बंडल ताले गोटे इंडिफरेंस कर्व ऊपर जेते कमोडिटी बंडल रहले सब जांका कोन विल प्रोवाइड द इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ताले देयर बाय ही विल चूज डेफिनेटली द इंडिफरेंस कर्व इफ दैट इंडिफरेंस कर्व इज चूजन आउट ऑफ ए इंडिफरेंस मैप ताले गोटे इंडिफरेंस मैप कोन का कहूचे ना इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट्स ऑल दोज इंडिफरेंस कर्व व्हिच रिप्रेजेंट
different levels of utility according to the situation. ताले मने करा जाओ 1 IC1 IC2 IC3 ताले आमे जानि आगुरु पढ़िचे कौन कि पिले आमे आगुरु पढ़िचे कौन indifference curve. Higher indifference curve represents higher level of satisfaction. ताले in the present figure there are 3 indifference curves, that is 1 2 and 3. ताले lower indifference curve that is 100, then 200, then 300. ताले एथुर आमे जानले कोन ना higher indifference curve provides higher level of satisfaction, whereas lower indifference curve provide lower level of satisfaction. ताले it depends upon the situation of the that is indifference curve, how it is situated in this figure. ताले we will go to next question. Next question, the indifference curve may be used to explain. ताले indifference curve आमे कौन पे यूज करूचे? The leisure income trade-off, need for overtime rates higher than the normal wages, evaluation of alternative government policies, all the above. Who can say? D. How के कहबो? Give your answer. How के दबो आंसर? हाँ शुभ्रा मिश्र एक्सप्लेन करी मु बर्तमान तमरो लीजर इनकम ट्रेड ऑफ मीन्स कौन? हाँ ऑप्शन ए कहूँ लीजर इनकम ट्रेड ऑफ इनकम आउ ट्रेड ताले इनकम रे कौन इफेक्ट पड़ुची लीजर ताले लीजर रहिले से कौन करूची लीजर मीन्स कौन कि तमे ट्रेड ऑफ बिटवीन इनकम एंड लीजर पढ़ी न हाँ ताले एटा हमर कौन देखाउची ना लीजर आउ इनकम आ भितर ट्रेड ऑफ एटा को हम मेजर करछे कोठी ना विथ द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व नीड फॉर ओवर टाइम रेट हायर देन द नॉर्मल वेज ताले दिस विल नॉट कम कहीं एटा आसीबो नै नीड फॉर ओवर टाइम रेट हायर देन द नॉर्मल वेज रेट आमे केबे ये करि परिबानी कारण सेठी आमे प्रोडक्शन कर्व को न पड़िबो वेज रेट नवा पे इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी ताले डी हूँ ऑल दी एबव मुझे कहली तीन टा जाक एक्सप्रेस कली इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी ताले गवर्नमेंट पॉलिसी जो डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करूची ताले अल्टरनेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी की रिप्रेजेंट करूची बोली आमे कहबा यूज टू एक्सप्लेन ताले हाउ वी कैन यूज इट वी कैन नॉट यूज इट ताले ओनली द लीजर इनकम ट्रेड ऑफ टा will be your correct answer. Any remark on that? Tell me. This is your answer A.
the leisure income trade-off. Got it or not? बुझी पाला ना नहीं? ओके नेक्स्ट जीवा देखो मार्शल एंड डिमांड कर्व with negative slope can easily be drawn from Hickson concept, rationality behavior of the consumer, the revealed, it is your revealed preference, none of the above. Who can say? The Marshall and demand curve with negative slope can be easily drawn from Hickson concept, rationality behavior of the consumer, the revealed preference, none of the above. के कहवा हाँ आर ऑप्शन एटा कौन है ना लीजर इनकम ट्रेड ऑफ गोटे लोक जिते बड़े लीजर नौची ताले से कम समय लेबर करूची ताले से यूटिलिटी केते पाउची यूटिलिटी निश्चित किछि पाइबो अधिक कारण दैट इज आल्सो मु लीजर ये करी यूटिलिटी पाउची आउ जने मनी इनकम करी जो टाइम टाकू सी स्पेंड कला ताले से मनी इनकम रेज कला ताले सी ता देर भी यूटिलिटी पाउची ताले ए जो यूटिलिटी कांसेप्ट ताले कौन कहा को यूज करी आमे एक्सप्लेन करूचे दैट इज इंडिफरेंस कर्व ताले दिस विल बी योर कर्व ट्रेड ऑफ कौन ताका भीतर जो रिलेशन टा रहला ट्रेड ऑफ मिक्सअप टा थायरी बुझी पारला हाँ यस थैंक यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए चार्टा रु किए आंसर हम देख व्हिच विल बी योर आंसर आंसर कोडा हम हाँ गिव मी योर आंसर आदर किए चारोटी ऑप्शन रु किए आंसर हम बी मार्शालियन डिमांड कर्वटा रेशनैलिटी बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर ऊपर केमिति डिपेंड करूची करिवो कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड मार्शल एटा को ड्रॉ करचनी मोर विल बी द प्राइस लेस विल बी द डिमांड लेस विल बी द प्राइस मोर विल बी द डिमांड बट विथ द हेल्प ऑफ आमे कोन करछे विथ द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व वी आर ड्राइंग द डिमांड कर्व द डिमांड कर्व इज गोइंग टू ड्रॉन जो माने बी ऑप्शन दला आउथर टेक ए थॉट कौन है पर आंसर बी इज योर रॉन्ग आंसर again you think and give answer then I will explain I explained you some that जो B the rationality behavior of a consumer rationality behavior relation कौन ना how he derive maximum satisfaction behavior of the consumer ना ना behavior of the consumer कोठी अछि तमरो ऑप्शन ने कोठी अछि तमरा आंसर हम दि रिवील्ड प्रिफरेंस ताले तमे को कमोडिटी बंडल रिवील्ड प्रिफरेंस विल बी योर आंसर नॉट ए सी विल बी योर आंसर ए हम नहीं हिक्सियन कांसेप्ट कौन एटा तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस
हिक्स कौन आम कही हिक्स आलेन डेवलप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कही कौन मार्शल एंड डिमांड कर्व विथ नेगेटिव स्लोप कैन इजिली बी ड्रॉन फ्रॉम दैट इज योर रिवील्ड प्रिफरेंस से ड्रॉ कर परिबो with the help of the revealed preference कहीं ना जिते बड़े मोर प्राइस ता पाखे हम ताल सी कौन कर अधिक अधिक कमोडिटी कंज्यूम कर जिते अधिक कमोडिटी कंज्यूम कर प्रति कमोडिटी कौन लेस लेस यूटिलिटी पाइबो ताल नेगेटिव स्लोप आसीगला है ताले आमर इंडिफरेंस कर्वटा को किए एनालिसिस करुची इंडिफरेंस कर्वटा आम क्या बेस करुचे ताले कमोडिटी बंडल जब रहा सेम ये को ताले आमे जो डिफरेंट एक्सियम यूज करुचे ताले दैट इज किए ना रिवील्ड प्रिफरेंस ताले दैट इज कंज्यूमर प्रिफर्स वन टू अनदर ही इज रिवील्ड टू प्रिफर वन कमोडिटी बंडल ताले व्हिच विल हेल्प अस टू ड्रॉ द डिमांड कर्व ताले मार्शल एंड डिमांड कर्व विथ ए नेगेटिव स्लोप कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी और विथ ड्रॉन फ्रॉम रिवील्ड प्रिफरेंस ताले से गोटा को काई प्रिफर करूनी आ गोटा को काई प्रिफर करूची बुझिएला सी मानस रंजन यू आर करेक्ट अच्छा नेक्स्ट वी विल गो अच्छा हाँ नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स नेगेटिवली डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप ऑलवेज साई अंजलि डिमांड कर्व ऑलवेज हैव नेगेटिव स्लोप कहीं ना प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर रिलेटेड indirectly related to each other if price will rise demand will fall and demand will rise price will price will fall demand will rise अच्छा it is isoquant देखो ordinal utility approach only assumed the existence demand curve isoquant indifference curve and their convexity all the above ये कहबो what would be your answer आगे क्वेश्चन बुझ ordinal utility approach only assumed the existence of कौन demand curve isoquant indifference curve and their convexity एठी देखो डिमांड कर्व हम ना कहीं से कही ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच रिलेटेड टू कौन ना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ताले एटा को हमें कहबानी आइसोक्वांट डिपेंड्स कौन हाँ यस सुब्रा मिश्रा यू आर करेक्ट सी इंडिफरेंस कर्व एंड देयर कन्वेक्सिटी ताले दिस विल बी योर आंसर इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स कन्वेक्सिटी ओके ताले दिस वन इज योर आंसर एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी डाउट chat me I am waiting for your answer
The answer. Oh. Revealed preference theory provide the proof for the existence of demand curve, product curve, cost curve, indifference curve and their convexity. Which would be your answer? देखो फास्ट आगे देखो आंसर रे कौन दउची आमे जेतले एमसीक्यू चूज करिया को जिबा आमे प्रथमे आंसर टा को देखिबा से कौन दउची एठी देला रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ताले एई थ्योरी कौन चूज करूची ना डिमांड कर्व प्रोडक्ट कर्व कॉस्ट कर्व इंडिफरेंस कर्व एंड देयर कन्वेक्सिटी ताले व्हिच वन इज योर करेक्ट आंसर explain ordinal utility. Acha, how many approaches are there to explain the utility analysis? Now, one is your cardinal utility analysis, another is your ordinal utility analysis. Ordinal utility analysis was developed by or explained by Hicks and Allen. Tale ordinal approach means kona? Now, according to ordinal approach, that utility cannot be measured quantitatively, but cardinal approach कौन कहूची utility can be measured quantitatively. ताले ordinal utility say that utility can be ranked only. ताले which can be represented with the help of the indifference curve. एबे बुझिला ordinal utility हमें क्या कहूचे that is utility cannot be measured in quantitative term. It can only be measured with the help of ranking. ताले आमे खाली rank करी परिबा. We cannot make it or measure it quantitatively. ताले here what would be your answer? ताले one option that is demand curve, second option that is product curve. हाँ yes माने ordered कौन according to माने it will be ordered preference. Utility can be observed only, yes, ordered only. That is according to the rank, higher or lower, more or less. अच्छा what would be your answer for this? C. अरे ये C देला एटी कौन होची cost curve. ताले तमार रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कौन कॉस्ट कर्व विषय आलोचना करूची कहा पर डिस्कशन करूची रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हाँ को आंसर दिया पिले डी यस इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स कन्वेक्सिटी ताले revealed preference theory explains indifference curve and its convexity. D. Thank you. Next question. कितने slide गला केमी जानिया देखा this is your general studies for these exam that is CGL, SI, Police, RI, ARI, OMIN, ICDS and SFS, LSI, Forest Guard, Fireman, Constable. Tale for all these examination, Udyakar platform is giving you materials or provide you study material along with the teaching classes. तमरो डाउट क्लियर करिया पई तमे गोटे जिंस विषय भलरे जानिया पई तमे परीक्षा केमती अटेंड करिया पई जनरल नॉलेज हो इंग्लिश हो वेरियस सब्जेक्ट्स ऊपर तमरो एठी क्लास निया जाउछ एनु सबु पिला को अप्रोच एवं सबु पिला माने चेष्टा करो दैट मोर एंड मोर यू विल जॉइन इन द क्लास ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो ठीक है ठीक है 19 टा जाई
ताले revealed preference theory provides the basis for constructing price index number गोटे, cost of living index number, quantity index number, whole price एटा wholesale price index number, wholesale price index number. ताले वर्तमान तमे कुआ which answer will be correct? First है price index number, second है cost of living index number, third है quantity index number, fourth है wholesale price index number. ताले which one would be your correct answer? ये कहबो? Give me answer. हाँ, ये आंसर दिया. B. Who told? Sai Anjali. Okay. Anybody else? Anybody else? Any answer? I would expect from you. B. Anybody else? Anybody else? Are you are 9 students there. Tell me. देखो, revealed preference theory already I have taught, and this class you just try to ask these type of question in the class. आमे जो जनरल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस नौचे से पचारे आई कैन एक्सप्लेन. हियर ओनली वी विल डिस्कस अबाउट MCQs. ओके, MCQ रे कहली पा तुम पूर्व किए जने पचार रिवील्ड प्रिफरेंस उपरे. रिवील्ड प्रिफरेंस कौन होची? इफ सम कमोडिटी बंडल्स आर देयर, ताले व्हिच कमोडिटी बंडल ए कंज्यूमर इज रिवील्ड टू प्रिफर. ताले को सर हाँ मुझे कहूँ से जिनस रिवील प्रिफरेंस जिनसा कौन ना हाउ ए कंज्यूमर इज गोइंग टू रिवील सपोज देयर आर सो मेनी कमोडिटी बंडल्स, ताले हाउ वन कमोडिटी बंडल इज गोइंग टू रिवील टू बी प्रिफर्ड. ताले द कंज्यूमर रिवील्स टू प्रिफर, ताले को कमोडिटी बंडल टू से प्रिफर करूची. ताले दैट मीन्स व्हिच कमोडिटी बंडल विल प्रोवाइड हिम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. ताले दैट विल बी प्रिफर्ड बाय कंज्यूमर. हाँ ये कहली तो रिवील्ड प्रिफरेंस ऊपर कहली. सपोज सम कमोडिटी बंडल्स आर देयर, ताले ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? गुड इवनिंग. हाँ रश्मिता एंड अन्ना बुझी पार कि नहीं कह. इरे सपोज सर्टेन कमोडिटी बंडल्स आर देयर, ताले गोटे कंज्यूमर को कमोडिटी बंडल को चूज करिवो, ताले जो थ्रू से मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पाइबो. ताले व्हिच विल प्रोवाइड हिम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, ताले ही विल बी कौन? दैट कमोडिटी द कंज्यूमर विल रिवील टू प्रिफर दैट कमोडिटी बंडल. ताले डेफिनेटली ही विल चूज. यस रश्मिता बुझी पारलो. ठीक है, थैंक यू. In the class you ask me and again I will ask you detail. I will discuss you. ताले here you just see this is your answer, cost of living index number. कहीं ना cost of living index number shows कौन? ताले how a consumer is going to consume the goods and A केमिति हैला? price index number कौन? What is price index number? Relative price ratio multiplied with 100, that is relative price index. P01, 0 is base year, 1 is your current year, that is R1 by R0 by R1,
इंटू 100 किंतु एठी कौन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ताले तार सीए जेति की जो कमोडिटी की परचेज करूची तार प्राइस रिलेटिव की नहीं एटा कैलकुलेशन होउची ताले सीए जो कमोडिटी बंडल को एक्सेप्ट करूची मेसेज रिट्रैक्टेड ताले सेटा कौन होउची सेही गोटा को आमे बुझौची एटा ताले दैट इज कौन ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर नेक्स्ट देखो आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड हिंदी दिस इज योर प्राइस 1599 एंड दीज आर योर एसएसबी टीजीटी एलटीआर आरएसटी ओएसएसटीईटी these courses are offered by Udyakar classes. If anybody wants and would like to join, you are most welcome to join. Okay, we will go for next question, and this is your for compulsory classes 999 and ODI, English, History, Political Science, Education, Economics, Commerce, Zoology, that is OPSC PGT class में these courses are provided by the Udyakar classes. ताले compulsory price is 9,999 and 1,999 that is for optional subjects. These courses are provided by Udyakar classes. Then everybody is welcome to join in the class. देखो when next question we will go when we find some people buying more of a goods when it becomes more expensive we call it as key effect, Ziegler effect, Veblen effect, Giffen effect, Dixit effect. ताले जेते बेले गोटे कमोडिटी अधिक एक्सपेंसिव होउची ताले सेते बेले लोक माने किछि लोक ताकू प्रिफर करूचनी किनिया पई ताले एटा को इफेक्ट को बुझौची हाँ you just read this question and give your answer. When we find some people buying more of a good when it becomes more expensive we call it as Ziegler effect, Veblen effect, Giffen GI एटा I GI FF Giffen effect, Dixit effect. किए कहबो बी किए कहला रिनु ओके आउ किए कहबो हाँ yes here various classes are going on. पीजीटी कोर्सेस रो सबु जंग दिया होची ओपीएससी पीजीटी कोर्स पई हाँ yes your answer is B. Your answer is B. B is correct. That is Veblen effect. देखा पिले ऊपर गोटे लिंक दिया तुमको टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम लिंक रे जाइकी तुम जिते कोर्स विषय जानवा को चाहूच यू कैन टेक यू कैन वेरीफाई इट और यू कैन गेट द नॉलेज और यू कैन आस्क हाँ यस आंसर इज बी वेरी गुड अच्छा ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट a farm in a competitive market will ये कहवा read the question properly answer properly when price is below average variable cost a farm in a competitive market will which would be answer
देख कंटिन्यू टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज एवरेज रेवेन्यू एक्सीड्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किंतु ये पचारि क्वेश्चन कौन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विषय ताले ए आंसर टी आम इमिडिएट डिस्कार्ड करिया ए आंसर केबे हबो नाही ए आंसर केबे हबो नाही ए आंसर केबे हबो नाही ताले सेकंड को आस शटडाउन एंड इनकर बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट कि जदि गोटे फार्म को आम बंद करदबा शटडाउन करवा ताले से फिक्स्ड कॉस्ट ओनली कवर करिवो ताले वेरिएबल कॉस्ट रो क्वेश्चन कोठी आसी ताले ए आंसर टाको आम डिस्कार्ड करवा एमती बुझिबो कंटिन्यू टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज एवरेज रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट ताले एटा को आम केमिति करवा ताले कंटिन्यू कले कौन माने मार्जिनल कॉस्ट को एक्सीड कले एवरेज रेवेन्यू आम ताको आम पा कहूचे एमसी इज इक्वल टू एमआरएल इक्विलिब्रियम बुझीला ना नहीं ताले ओबियसली सेटा ताले कौन हम क्वेश्चन हमर कौन अच्छी ना व्हेन प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट व्हेन प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ताले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिलो हेले कौन हो ना ही विल शट डाउन द फार्म एंड ओनली इनकर फिक्स्ड कॉस्ट ताले लॉस हिसाब से क्या ये करिवो ना फिक्स्ड कॉस्ट को ओनली बियर करिवो आउ वेरिएबल कॉस्ट रो क्वेश्चन आसीबो ना एनी आंसर आउ के दउची आंसर बुझेला ना बुझेलानी कार बुझेलानी जदि को आउ बुझेला जदि थम रेज करो गिव द थम मार्क हाँ बी केमिति हैला मते को जे कहला बी दैट इज किए सायरी को हाउ इट इज बी चैट कि मोर क्वेश्चन ता तुम आगे बुझ दैट इज द प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ताले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तल को पळे आसीबो जदि एवरेज रेवेन्यू ताले डेफिनेटली ही विल शट डाउन द फार्म ताले जदि शट डाउन कला फार्म ताले वेरिएबल कॉस्ट आउ कोठी आसिला ताले आंसर कोठा हबो ना आंसर विल बी योर डी ताले ओनली ही विल इनकर कौन ना फिक्स्ड कॉस्ट हाँ यस ताले बुझेला ना नहीं थैंक यू रिनू थैंक यू हाँ ना देख माने जिते बड़े से कहूँ तुम प्राइसटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तलू को पलि आसला ताले से कौन करिवो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर करि परिबो नाही कहीं ना किसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बियर करिवो फिक्स्ड कॉस्ट तो आगुरु बियर करूची किंतु ताले से कौन करिवो ना को क्वेश्चन आंसर ठीक बोली तुम जानिबो ना सी ओनली फिक्स्ड कॉस्ट बियर करिवो एवं फार्म को शट डाउन करिवो ओके ठीक अच्छे देख इन द लॉन्ग रन द एग्जिट क्राइटेरियन फॉर ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फार्म in the long run the exit criterion for a profit maximizing firm कौन देला आंसर AR is equal to MC P is less than ATC P is greater than ATC AR is greater than AFC से कही कौन in the long run the exit criterion for a profit maximizing firm exit criterion केते बेले आसीबो हाँ कुआ अरे मानस कौन बुझी पारलन तुमको कहली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जिते बेले गोटे फार्म ऑप्शन बी जिते बेले गोटे फार्म वुड नॉट बी एबल टू कवर एटलिस्ट इट्स वेरिएबल कॉस्ट देन डेफिनेटली ही विल शट डाउन द फार्म ताले जदि सी किछि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर करूथिबो ताले से कौन करिवो ना he will continue its production waiting for future profit ताले जेते बेले he would not be able to cover that is your variable cost average variable cost ताले he will shut down the farm जदि shut down कर देला ताले कौन bear करिवो ना that is only fixed cost हाँ your answer is correct that when price will be less than average total cost or average cost that the farm will shut down exit criterion exit the farm will exit the farm that means जेते बेले फार्म इनकर करिवो लॉस सेते बेले से फार्म टी छाड़ी दबो ताले दिस प्रोसेस जेते बेले प्रॉफिट करिवो ताले लॉन्ग रन ने कोन कहूची हमकु ना दी फार्म्स इन द लॉन्ग रन ओनली इनकर नॉर्मल प्रॉफिट ताले नॉर्मल प्रॉफिट मींस कोन
ना neither he will gain positive profit nor he will incur loss. তাহলে no loss and no gain concept will be there. Under perfect competition, short run supply curve is identified as rising portion of the marginal cost curve, rising portion of the average cost curve, rising portion of the marginal cost curve lying above the average variable cost curve, rising portion of the average variable cost curve. Who can say the answer? This is a very nice question. देखो, under perfect competition, short run supply curve is identified as. आमे short run supply curve काहाकू कहूचे? आंसर देला अछि कोन ना राइजिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइजिंग पोर्शन ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, राइजिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइंग अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, राइजिंग पोर्शन ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. हु कैन से ये कहबो? C. Subhrat कहला C. तापरे next. Everybody try to give the answer. Everybody try to give the answer. ये कहबो? C. रेणु कहला C. हिना कहला C. ओके, C is your answer. कहीं की ना जेतेबेले मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आसीबो दैट द फार्म विल शट डाउन. That will not be the portion that is remaining the marginal cost curve, the portion of a marginal cost curve which remains below the minimum average variable cost curve cannot be considered as your supply curve. The supply curve, short run supply curve will be considered as the rising portion of the marginal cost curve above the that is average variable cost curve, above the average variable cost curve. Very nice. तापर देखो, in the Cobb-Douglas production function, the elasticity of factor substitution is equal to 0, equal to unity, greater than unity, less than unity. किए कहबो elasticity of substitution ने this question answer? In case of Cobb-Douglas production function, the elasticity of substitution or elasticity of factor substitution is equal to, yes, give your answer. हाई बी आउ किए कहबो? आउ किए कहबो? Anybody else? आउ किए कहबो? A. How can anybody else give your answer? B. Okay. B is your answer. कहीं की तमे Cobb-Douglas production function ने पढ़ी थीबो, that is elasticity of substitution is equal to elasticity of substitution of Cobb-Douglas production function is always equal to unity. Okay, thank you very much. Today's class is over. We are just going, the Udyakar classes is going to provide you
that we will discuss various previous year questions and we will inform you, notify you which day I will take that previous year question discussion. It is newly introduced and it will be continued from this this Monday will only be discussion of MCQs, and another day will be I will discuss about the previous year question of lecturer, SSB lecturers. Then it will be gainful to you. Whether it will be good for you or not, it will be helpful to you or not. Show your thumb. Okay, thank you. Tomorrow we will meet again taking population policies. We will discuss in the next class about the population policies, various population policies to control the growth of population in our country. Okay, thank you very much.